So hello everyone, this one is the video number 9 and lab number 9. So इसमें हम explore करेंगे HTTP request smuggling to capture the other user request. Okay, this lab involves the front and back end server and the front end server doesn't support chunk encoding. Okay, so basically ये अपना CLTE वाला हुआ केस जहाँ पर front end server अपना content length use करेगा and back end chunk encoding. So to solve this lab, the smuggles a request to the backend server that causes the next user request to stored in the application, then retrieve the next user request and use the victim user cookie to access their account. Okay, got it. We have already idea about it कि अपने को downgrade करना है HTTP 1 पे and there is one the lab simulation activity of the victim user. Every few post requests that you will make to the lab, the victim user will make their own request. So you might need to repeat your attack a few times to ensure that the victim user request occur as required. Okay, got it. समझा मैं. यहाँ पर एक hint भी given है अपने को. Let's check it out. If you are encountering time or timeout, this may indicate that the number of the bytes you are trying to capture is greater than the total number of bytes in the subsequent request. Try to reduce content length as specified in the smuggle request prefix. Let's start the lab and solve it first. Start the lab. So now lab is working fine. So I will copy that request and paste the same request into our browser. Click enter. And what is given in this application is we can view the post and also able to comment test. Okay, okay. Post the comment. Back to the post. Okay, similar इस functionality का use करना है अपने को कि we are able to use this functionality to लाइक जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट रहेगा तो यूजर का जो रिक्वेस्ट रहेगा जो नेक्स्ट यूजर का वो कमेंट में आ जाए मतलब रिक्वेस्ट का पूरा डेटा सो विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ दिस आई विल मूव टू द बर्ब गो टू द प्रॉक्सी टैब मूव टू द एचटीटीपी हिस्ट्री एंड मैं यहाँ से जो मैंने अपना कमेंट किया था आई थिंक दिस वन नॉट पोस्ट रिक्वेस्ट कमेंट वाला इसको मैं अलग से रख लेता हूँ सेंड इट टू रिपीटर देन ये तो अपना कमेंट वाला रिक्वेस्ट है वाला रिक्वेस्ट and I will take one root वाला request जो अपना रहता है send it to repeater. Okay, first I will change the request HTTP version, change the request method, remove all unwanted headers from the request, and first I will confirm that backend server is using transfer encoding or not. अपना इसको अपने को टाइम आउट मेथड से अपन चेक कर लेते हैं क्विकली ट्रांसफर transfer encoding chunk chunked value and we will give one more that enter enter x से अपन close कराएंगे and we will give the value 6 what will be the value I think 7 okay got it 7 actually auto update भी होना है तो auto update कर देगा वो so when I send this request and I think it will take time so it is 100% sure that backend server is using transfer encoding and yeah we will get the response from the backend server that timeout wala. Okay, now we will prepare the attack request. ATTACK request. Okay, remove all the data first क्योंकि बैकएंड सर्वर अपना जीरो का वेट कर रहा है तो उसको जीरो मिलेगा वहां पर वो एंड कर देगा रिक्वेस्ट ट्रांसफर इनकोडिंग एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वाले रिक्वेस्ट को एज ए यूज करेगा सो एक्चुअली बैकएंड सर्वर क्या कर रहा है अपना जो जीरो का वेट कर रहा है जैसे उसको जीरो मिलेगा वो इस रिक्वेस्ट को एंड करेगा एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट को इनिशिएट करवाएगा. Okay, so what we will do first, create, we will take this request क्योंकि अपने को कमेंट करवाने का है नेक्स्ट यूजर का सेशन आईडी. आई विल शो यू कैसा सीन रहेगा वहाँ पर. आई विल फर्स्ट अपडेट दिस रिक्वेस्ट अपने को वर्जन चेंज करना है एंड रिमूव सम अनवांटेड हेडर्स फ्रॉम द रिक्वेस्ट. ओके सेशन विल बी देयर एक्चुअली सेशन बाइंड रहेगा यूजर से सो सेशन विल बी देयर तभी वो कमेंट करेगा एंड सेशन CSRF विल बी अवेलेबल. Comment will be okay. We will copy that thing and directly paste over there. So first request यहाँ पर end होगा and second request वाला comment वाला आएगा. So comment वाला जो मैं parameter है इसको end में end कर लेता हूँ. So whenever this one is hit ना तो next user का request कैसे आएगा देखो मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि user अपना समझो कि अपना admin user है तो ये admin user का request में यहाँ session ID रहेगा ना तो वो next request के comment में से add हो जाएगा और जो भी वो एज ए उसको कमेंट रीड करेगा और ये अपना वाला रिक्वेस्ट के थ्रू वो कमेंट आउट हो जाएगा वहां पर एप्लीकेशन में. समझा ना इजी था. एंड इसको अपन ने क्या किया रिमूव किया फर्स्ट एंड ठीक यहाँ पर अपने को कंटेंट लेंथ देने का रहेगा
अब जो कंटेंट लेंथ क्या देने का है अपने को कि जो जो ये बॉडी भी कवर हो जाए साथ में कि कितना या सेशन आईडी भी आ जाए साथ में। सो आई थिंक इट मोस्ट प्रोबेबली इसका कंटेंट लेंथ रहना चाहिए। आई विल चेक फर्स्ट कि इस रिक्वेस्ट का कंटेंट लेंथ क्या रहना चाहिए। आई विल गो टू द नॉर्मल अपना प्रॉक्सी टैब। I will watch the normal request, how normal request will be look, and check the length of this 690. Okay, and post वाले का क्या रहता है? I will check it out. This is around 830 873. Actually ये वाला मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पर सेशन ये पूरा अपन कमेंट और कमेंट पे ले लेते हैं। 873 प्लस जो भी अपना बॉडी है इसका 120 950 अपन कंटेंट लेंथ रखते हैं। Okay, I think everything is looks fine, and I do one more thing that मैं एक normal request भी ले लेता हूँ. Send it to repeater. Create the normal request. Normal request. Okay. So request का version change करना है only अपने को. Yeah, everything is good. I will send the take request now. Okay, 200 response. Send the normal request. Invalid request. Got it. कुछ तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है. Let's see. इसका header ऐड करना रह गया मेरा. वो actually क्या content जा रहा है वो तो वहाँ पर ऐड ही नहीं हुआ. Send this request. Send the normal request again. I think it might be timeout. It will take time now. We will reduce the content length up to 857. Let's send this request again and send this. Okay, so I might be possible कि वो content length की वजह से हो रहा होगा. Navigate to the browser and yeah, refresh it. So you will easily watch out here कि मैंने जो बताया था आपको जो comment का जो T आ गया मतलब T मैंने वहाँ पर mention किया था ना request में वो T and जो मेरा वाला जो request है वो यहाँ पर append होके आ गया है. कोई अभी सेशन दिखा नहीं मेरे को सो आई विल डू वन थिंग आई विल अपडेट द लेंथ ऑफ दिस कंटेंट लेंथ सो व्हाट आई हैव डन हियर इज आई विल जस्ट ट्रबल शूट इट के यहाँ पर 2924 पे मल्टीपल रैंडम वैल्यूज को चेंज किया एंड आई हैव लुक इट व्हेन यू लुक दिस ना आई थिंक माइट बी समथिंग इज मिसिंग लेट्स चेक दैट कंटेंट उसका लेंथ कितना बैठ रहा है अभी भी 32 27 normal request अपना j तक था I think I have already j तक value send this attack request send this normal request I think j वाला नहीं work नहीं करेगा ये let's wait and watch http.com 60 सब कुछ तो शॉर्ट कर दिया यार मैंने nothing will be left from my side सब कुछ कर दिया जी invalid request I have http ऐसे ही रहने देते चलो send this request again refresh the page back to our page. Okay, now I will get one more word up. Just move to over here, update the value. Okay, now I have solved this lab or not. Let's just refresh the page. Still okay. Now lab is solved. अपने पास आ गया है victim user का section ID. So thank you so much for watching for my video and I think this one is like troubleshoot बहुत मांगा इस वीडियो ने. So yeah, thank you.